गाइस, मैं हूं क्रिस, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। चलिए आज फिर कुछ नया और कुछ अच्छा सीखते हैं। सो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। Okay guys, welcome back. Let's see what we are going to see in today's video. First thing we are going to see any. Any is a class and it is a super class for all Kotlin classes. So whatever class you create or you inherited from some other class, it is a super class for any Kotlin class. It provides three methods: equals, toString and hashcode. We'll see while working on code that what is the use of that. Apart from that, we'll see the data classes. What are data classes? Data classes in general used for holding data. So what it does, say you have some data coming from server or locally you want to hold some data. So for that purpose, we are using data classes. Constructor must have at least one parameter, right? You cannot provide blank constructor for data classes. Constructor parameter must be where or val, right? You cannot define any parameter in constructor without where or val. Either you have to provide where or val. Cannot be abstract, open, sealed or inner class. So the data class, you cannot make it abstract, open, sealed or inner class. By default provides implementation for equals, copy, toString, hashcode and component and methods. We'll see how it works when we'll be working with code. Properties in class body does not participate in equals. So what does that mean? Again, we'll see while working with the code. Can be used for destructuring declaration. So we'll see what is destructuring and how we can do that. Pair and triple are standard data classes from Kotlin. So we'll see how to use these two classes and what and where we can use these. So example of data class, we use data bird keyword and then class and then class name, and then you can define your variable in constructor with where or val. So let's see data classes and any in action. Okay, let's see any and data class in action. So as always, I'll create a package for any. Okay, so now say I define a class, right? Say test any, right? Okay, so what we saw about any, what we said about any in our point, that any class, right, that is basically by default derived from any class of Kotlin, right? So I created test any class here. Say I have main function. In main I create an object of this class. How can I create? You know very well. Val test is equal to test any, right? So if I say print ln test dot equals, right? Say I said another test any class, right? I can say print ln test dot toString, right? And print ln test dot hashcode. So if I run this program, you see it got compiled, right? The first value, right, test dot equals test any, I got false. toString I got this and hashcode I got this. Now as you can see that we haven't provided any method in this class, these three methods, right? Equals, toString and hashcode, but still I'm able to use those methods, right? So those methods are basically from any class, and by default if you are not using any inheritance or you're not driving your class from any other class, by default is derived from any. So in case you are driving from some other class, right? So say let's have a class super any, right? And if I drive my class from super any, right, and I run this, sorry, super any constructor I have to provide, right? So what is this?
it should be open, right? And if I try to run that, you see I again got the value. So it means that if you drive your class from other class, as in Kotlin you can only drive from a single class, right? Your super any now is derived from any. So if I see the hierarchy, what will be the hierarchy of this class? Test any, that is the child of super any, and super any is child of any class. So up to any level or in any class we'll get these three methods. So now let's see what these method does. पहली चीज़ तो हम देखते हैं इक्वल्स। इक्वल्स क्या करता है? इक्वल्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उसकी इक्वलिटी चेक करता है, ठीक है? तो अगर मैं टेस्ट को चेक करता हूँ टेस्ट के इक्वल, राइट, सो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा आपका। सी इससे ट्रू। तो बेसिकली डिपेंड्स की इक्वल्स कैसे काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू के ऊपर करता है, बट बीइंग द मेथड फ्रॉम योर बेस क्लास यू कैन ओवरराइड इट एज। तो अगर मैं भी मान लीजिए इस मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ, या सेम सिग्नेचर के साथ एक दूसरा मेथड डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, इक्वल्स एनी कोलन एनी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है ये हम बाद में देखेंगे, अभी जब हम नलिबिलिटी पढ़ेंगे, राइट, या नल सेफ्टी पढ़ेंगे। तो फॉर नाउ दिस इज द सिग्नेचर ऑफ दिस इक्वल जो आपकी एनी क्लास में डिफाइन है, ठीक है? तो अभी मैं इस तरह से करता हूँ तो देखो ये क्या बोल रहा है, सेइंग दैट इक्वल्स हाइड्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई हैव टू ओवरराइड दैट। सो इफ आई ओवरराइड दैट इट्स फाइन, राइट, एंड आई हैव टू रिटर्न समथिंग। तो से आई रिटर्न फॉल्स, okay, so equals, now my equals, if I use any equals on this it will always return false. So regardless what you are equating with, किसी के साथ भी आप चेक कर रहे हो ये हमेशा false ही रिटर्न करेगा। सो सी false, राइट? तो इस तरह से आप चाहे तो ये तीनों मेथड को ओवरराइड भी कर सकते हो। टू स्ट्रिंग क्या करता है? जो टू स्ट्रिंग है आपका, वो आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर हम स्ट्रिंग या इंटीजर उसके साथ इसे यूज़ करते हैं तो ये वो पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ करते हो तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो क्लास का नेम @ सम वैल्यू, राइट? एंड योर हैश कोड अगेन प्रोवाइड सम हैश कोड। हैश कोड इज ए specific code and it's unique for all the objects, so you can take it that way. So now n is clear, I guess. So let's move to data classes. Okay, so अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरा पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज का क्या नाम रखेंगे? से आई पुट डाटा, राइट? तो अब हमारे डाटा क्लास के लिए क्या पॉइंट था? डाटा क्लास का पहला पॉइंट तो ये था कि हम जो है वो हमारे डेटा होल्ड करने के काम आती है। तो मान लीजिए एक हम क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, कोटलिन क्लास। वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे आप सीधे अगर डेटा क्लास बोलोगे तो वो आपका डाटा क्लास बना देगा। और यहाँ पे मान लीजिए मैं नेम देता हूँ, से मान लीजिए मेरी न्यूज़ है, ठीक? तो न्यूज़ को इस तरह से आप देखोगे डेटा क्लास न्यूज़, राइट? बट मैंने अभी डेटा क्लास बनाया तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? डेटा क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, राइट? तो हमने अपने वन ऑफ द पॉइंट में क्या बोला था कि हमारा जो डेटा, अगर हम डाटा क्लास कुछ बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर पैरामीटर में एटलीस्ट एक जो है वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमारी न्यूज़ होती है तो न्यूज़ का क्या होता है? आपका टाइटल होता है। टाइटल किस टाइप का होता है? स्ट्रिंग टाइप का। तो अभी आप देखोगे तो फिर से कह रहा है क्या? डेटा क्लास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव प्रॉपर्टी वेल और वेयर पैरामीटर, राइट? तो ये मैंने वन ऑफ द पॉइंट बताया था। तो हमें यहाँ पे क्या, मान लीजिए अभी हम वेल दे देते हैं, ठीक है? दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? मान लीजिए उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे मैं DSC से देता हूँ डिस्क्रिप्शन, अगेन दैट विल बी टाइप स्ट्रिंग, राइट? तो ये हमारी डेटा क्लास है। अब ये किस काम में आ सकती है? जैसे मान लीजिए मेरी कोई एप्लीकेशन है जो सर्वर से मुझे न्यूज़ ला के दिखाती है। तो जब मेरे पास सर्वर से डेटा आ रहा होगा, सर्वर से मेरे पास जो है क्लासेस या ऑब्जेक्ट बन के तो आ नहीं रहे होंगे। मेरे पास क्या आ रहा होगा? कुछ ऐसा आ रहा होगा कि टाइटल ये स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन ये स्ट्रिंग है, राइट? तो उस डेटा को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए मैं उसे क्या कर लेता हूँ? क्लासेस में स्टोर कर लेता हूँ, ताकि मैं उसे एज ए डेटा यूज़ कर सकूँ।
ठीक है। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, ये अपनी डाटा क्लासेस यूज़ करते हैं। इस न्यूज़ को हम, जब हमारे पास सर्वर से डेटा आएगा, हम एक न्यूज़ का ऑब्जेक्ट उस समय बना लेंगे। ओके, तो हमने दो तीन पॉइंट यहाँ पे देख लिए। क्या क्या पॉइंट देख लिए आपके, कि जो है आपके एटलीस्ट एक पैरामीटर होना चाहिए, वेयर या वैल होना चाहिए। ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। हमने कहा था कि इससे जो है हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बना सकते, राइट। तो अभी मैं इसके अंदर एक मेथड बना लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बना लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज स्पोर्ट्स न्यूज़, राइट। और ये क्या रिटर्न करेगा मेरा, सिर्फ बोलियन टाइप का कोई रिटर्न कर देता। तो अभी आप देखोगे तो ये एरर बोल रहा है। क्या एरर बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इतना इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास न्यूज़, राइट। so if I try to make this class abstract, so we'll get error, modifier abstract is incompatible with data. So data and abstract you cannot use together, right. Same is for sealed classes, right. So same error we are getting, that we cannot use sealed and data together. Okay, similarly inner class as well we cannot use that, so you can try that your own. तो मान लीजिए अब इस क्लास में मैं जो है अपने एक मेथड बना देता हूँ। क्या मेथड है मेरा, फन इज इक्वल, राइट, इज इक्वल। और इसमें मैं एक दूसरी न्यूज़ का पैरामीटर ले लिया, मान लीजिए मैंने न्यूज़ ऑफ न्यूज़, राइट। तो अब मैंने जो है रिटर्न कर दिया। क्या मैंने चेक कर लिया भाई, इफ न्यूज़ डॉट टाइटल इक्वल टू टाइटल एंड राइट, न्यूज़ डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, राइट, and return type will be boolean, and say I return this. So this is an expression. So what will be the final result of this? So we have equal operator, so it will return whether true and false, and again true and false. So true and false and true and false, final result will be either true or false is equal, right. So something like that. Now say I have main method here. In main method what I can do, I can create an object, right, of news. So say val news1 is equal to news, right, and say I provided title news and then news description, right. And similarly I created another news with news2, right, and say I change description to description1. Now I do println. Now I say news1 dot is equal, and I passed news2, right, news2, right. If I run this program, what I'll get, I'll get false, because I have already written this implementation that both the things, description and title, should be same. So if I change this, right, so this is true now. So for data classes, basically Kotlin provide equals method. It overrides equals method like that. So you don't need to write that. So now if I check same thing with equals method, which is provided by any, right, I'll get the same result, true. So why is happening, because your data class is overriding this equals method by default, so you don't need to override this method. Okay, I hope this is clear. Okay, so next method it provides is the copy method, right. So copy method, what is the copy method? So say I have news1, right. So if I say val news2 is equal to news1 dot copy, right. If I don't provide anything, it will create a new object with same values, news and news description. So now if I check, so news2, right, so again I'll get the same result. Why?
because I am creating same copy of this object. Now say I have a large object, right? And मैं चाहता हूँ कि जो है मेरा टाइटल चेंज हो जाए और न्यूज़ डिस्क्रिप्शन सेम रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर नेम्ड पैरामीटर को यहाँ पे, राइट, लाइक टाइटल इज इक्वल टू say new news, right? And if I try that now, I'll get false. Why? Because what it did, the copy, what it does, basically if you don't provide any named parameter, then it will create the सेम कॉपी. अगर आप कॉपी के अंदर कोई नेम्ड पैरामीटर देते हो तो वो पर्टिकुलर पैरामीटर को आपका अपडेट करके एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा. बाकी की जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेगी. तो न्यूज़ वन में अभी भी जो है मेरा डिस्क्रिप्शन की वैल्यू न्यूज़ डिस्क्रिप्शन ही होगी. इफ़ यू वांट आई कैन प्रिंट दैट. So news 2 dot say description, right? So if I try to print that, you will see it's the same, right? But at the same time, if I print title, you will see it's got changed to new news. Okay, I hope this is clear. Next thing is that I told you about equals is overridden. So same way your hash code and toString are also overridden by data class by default. So say I have another method func print string. I said get string. It will return a string, and if I return, what I return dollar, right? Then in bracket I say title is equal to dollar title comma, then I say what is that, dsc is equal to dollar dsc, right? And then I close the bracket, right? So say on is this news one. If I try that now, say println news one dot get string. So if I print that, that's my mistake. This way, okay. So if I try this way, so you will see how I have printed that news is equal to news and description is equal to news description, right? So if I try toString now, right? So toString, as I told, is overridden by this class, this data class by default. So if I try to print that, you will see I'm getting almost the same result, right? So this way, title, I think I made some mistake. Okay, so this way you will see that we are getting the almost same thing, right? The title is equal to news and the description is equal to news item. If you want, I can put news or class name in front of that, so we'll get almost same result, right? Another thing is that it's not giving any space between these, so we can do that as well. Okay, so what it tells us that this class, data class by default override toString method of any class to basically provide your object presentation in this form. Okay, so copy we have seen, equals we have seen, right? toString we have seen that toString, right? And equals have been overridden. Similarly, hash code is also overridden, so that's not a big thing. Now we see the component n, right? So component n, if I say news one dot component one, n means n stand for number of parameters you have, so it starts from 1 to n. So I have two parameters here, so always in this class when I create an object of this class, I'll get component 1 which will point to title, I'll get component 2 which will point to description. ठीक है,
तो जो मेरा एक क्लास है न्यूज़ वन, इसके अंदर जो भी मैंने कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे कंपोनेंट वन टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होते तो कंपोनेंट 1 2 3 मुझे मिल जाता। तो जब मैं कंपोनेंट 1 बोल रहा हूँ तो नथिंग बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और ये ले लेता हूँ जिसमें कंपोनेंट 2 है आपका, तो मैं ये प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे कि जो है मेरा न्यूज़ आ गया, जो कि मेरा क्या है, टाइटल है, और मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे जो है कोशिश करूँ कि मैं कंपोनेंट 3 एक्सेस करूँ तो एरर आ जाए, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। तो जब आपकी डाटा क्लास कंपाइल होती है बेस्ड ऑन कितने पैरामीटर आपने पास किए हैं, उसके हिसाब से आपके कंपोनेंट उतने ही बना देती है, तो ये आपको कंपोनेंट से मिल जाएगा। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, मान लीजिए कि एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मेरी क्लास लेवल की प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए वेयर इज स्पोर्ट्स न्यूज़ इक्वल टू फॉल्स, राइट। तो अभी मेरा क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी कहीं पे यूज़ नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये एक कॉपी इसकी न्यूज़ टू, मैंने इसकी क्या किया, कॉपी बना ली। तो न्यूज़ टू कॉपी बना ली, तो अब क्या इक्वल्स जो है मेरा जो है क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। बट से इफ़ आई सेट न्यूज़ टू डॉट इज स्पोर्ट्स न्यूज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे फॉल्स किया है। तो इनिशियली न्यूज़ वन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैंने उसकी एक कॉपी क्रिएट की, तो एक कॉपी क्रिएट, उस कॉपी क्रिएट जब मैंने क्रिएट की तो मैंने इस स्पोर्ट्स न्यूज़ को क्या बोल दिया, आपका ट्रू बोल दिया। तो अब जब मैं इसकी इक्वलिटी चेक करने जाऊंगा तो जो इसका ओवर रिडन मेथड है तो वो क्लास लेवल की प्रॉपर्टी को चेक नहीं करेगा। तो मान लीजिए मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि क्या आएगा कि ये ट्रू आ गया है, राइट। तो जो आपकी पैरामीटर वाली प्रॉपर्टी है, जो डिफ़ॉल्ट इक्वल्स का ओवर रिडन मेथड होगा वो केवल उन्हीं को चेक करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये भी चेक हो, राइट, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड कैसे करेंगे, ओवरराइड, सॉरी दिस इज बिटवीन कमेंटेड कोड। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ ओवरराइड इक्वल्स, राइट। सो से वेल न्यूज़ इक्वल टू अदर एज, राइट, न्यूज़। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ रिटर्न न्यूज़ डॉट इज स्पोर्ट्स न्यूज़ इज इक्वल टू इज स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड न्यूज़ डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड न्यूज़ डॉट टाइटल is equal to title, right. So if I run this now, so here I was getting true, right. So if I try to run that now, so I got false now. Why? Because now I have overwritten this equal method, and in that checking of that method I have considered class property as well. So by default equal method, which data class or Kotlin overrides for your data class, is not going to consider your class level property. Only whatever you are passing in your constructor is going to be considered. I hope it's clear now. So let's see next thing, destructuring. So what is destructuring? Basically destructuring is nothing but you can create multiple variable from a data class, right. So a comma b is equal to news 1, right. So if I say news 1 well in parenthesis a comma b, so what is doing, basically whatever are my these property, constructor property, this will provide a as title, b as description, right. So if I try to print that, println, right, a is $a and b is $b. There is lot of output, so basically let me comment this code up to here because we are dealing with news one only.
So now if I try to run that, you will see A is news, B is news description. So this method, right, creating variable from data classes directly, right, whatever properties has, is called destructuring. So same destructuring we have seen with for loop as well, when if you remember on array when we did in indices, right? So what we got the value and index both, right? So similarly so that particular feature is called destructuring. Next thing is pair and triple. So say pair example, I create new class pair एग्जाम्पल, ठीक है? तो पेयर एग्जाम्पल नाम की हमने क्लास क्रिएट कर ली। ओके, सो नाउ से कोई मेथड है, जैसे गेट टू वैल्यूज, मैंने ये मेथड रिटर्न किया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मेथड एक साथ दो वैल्यू रिटर्न कर दे, राइट? तो कोटलिन में बाय डेफिनेशन ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो मेथड है वो एट ए टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, राइट? इधर इंट, स्ट्रिंग, मतलब प्रिमिटिव टाइप या कस्टम टाइप, मान लीजिए कोई क्लास रिटर्न करनी है आपको, किसका ऑब्जेक्ट, वो कर सकता हूँ, बट आप एक ही चीज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए जो है कोटलिन एक क्लास प्रोवाइड करती है, जो कि एक डेटा क्लास होती है। वो क्या होती है? आपकी पेयर टाइप की, उसका नाम है पेयर। सो उससे हम कैसे रिटर्न में डिफाइन कर सकते हैं आपके, हम लिखते हैं पेयर, देन एंगल ब्रैकेट में हम बताते हैं कि उसके जो दो वेरिएबल होंगे वो किस किस टाइप के होंगे। तो मान लीजिए मैंने बोला इंट कोमा इंट, राइट? तो मैंने इसे बताया कि भाई मैं एक पेयर रिटर्न करूंगा, इसमें दो वैल्यू होंगी, वो क्या होंगी? आपकी इंट एंड इंट। सो मैं क्या कर सकता हूँ? रिटर्न कर सकता हूँ पेयर का एक ऑब्जेक्ट बना के, और उसके अंदर मैं दो इंट की वैल्यू दे सकता हूँ, मान लीजिए 2 and 4, राइट? सो दिस इज वैलिड। सो दिस वे आई कैन रिटर्न टू वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन एट ए टाइम। सो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा मेन है, तो मैंने जो है एक तो सॉरी, लेट मी चेंज दिस नेम, देयर इज सम मिस्टेक। So how we can rename a class? Refactor and then go to rename, right? And you can say pair. So wherever it's being used, everywhere it will get changed, right? Okay. So in main, let me create an object of this class. तो मैंने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए? मान लीजिए पेयर एग्जाम्पल इक्वल टू, मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना लिया? पेयर एग्जाम्पल, ठीक है? पैरेंथेसिस फॉर ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए मैं वेल रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूँ? पेयर एग्जाम्पल डॉट गेट टू वैल्यूज, राइट? तो अब मेरे जो रिजल्ट में है क्या आया हुआ? पेयर का ऑब्जेक्ट आया हुआ, ठीक है? तो मैं पेयर के अंदर से जो वैल्यू एक्सेस करूँगा वो कैसे करूँगा? प्रिंट रिजल्ट डॉट फर्स्ट, राइट? तो रिजल्ट डॉट फर्स्ट आपको ये फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से दे देगा, ठीक है? सिमिलरली सेकंड वैल्यू को आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट एलन कर लेते हैं। सेकंड वैल्यू को आप क्या कह सकते हो? रिजल्ट डॉट सेकंड, राइट? सो इफ आई प्रिंट दैट, इट शुड बी फाइन, ठीक है? आपका 2 and 4 मिल गया। तो इस तरह से हम यूजिंग पेयर, जो कि आपकी क्या है? डिफॉल्ट डेटा क्लास है, कोटलिन जो प्रोवाइड करता है। अब इसके जो पेयर के जो पैरामीटर में कुछ भी दे सकता हूँ। मान लीजिए मुझे पहला प्रिंट ये देना है, दूसरा स्ट्रिंग देना है, तो आई कैन डू दैट, बट आई हैव टू चेंज इट हियर जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? सो से आई सेट स्ट्रिंग रिजल्ट, सो दिस इज फाइन, ठीक है? तो यू सी द वैल्यू गोट चेंज। अच्छा, ये चीज़ कैसे काम करती है कि मतलब रन टाइम पे, या मतलब आप कुछ भी पास कर सकते हो, ये दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसे जेनरिक्स बोलते हैं। तो ये हम देखेंगे आगे जेनरिक क्या होते हैं। तो बट अभी आप ये समझ लो, इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यू टाइप डिफाइन कर सकते हो कि इसमें दोनों स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, एक स्ट्रिंग ये हो सकता है, इवन आप जो है एक कस्टम टाइप भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है? तो वहाँ से आपको जो है ये इस तरह से मिल जाते हैं। सिमिलरली आपको जो है एक ट्रिपल भी होता है, तो फन गेट 3 वैल्यू, राइट? तो सिमिलरली जैसे मैंने ये किया है, तो वैसे क्या होता है? आपका ट्रिपल होता है। ट्रिपल में भी सेम थिंग, इंट इंट स्ट्रिंग, मान लीजिए मैं 3 थिंग्स यहाँ पे या 3 पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक है?
तो मुझे यहाँ से जो है रिटर्न करना पड़ेगा। सिमिलरली ट्रिपल में मैं रिटर्न कर सकता हूँ। क्या क्या वैल्यू है, पहले इंट है मान लीजिए 2, फिर 4, फिर मैंने एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, ट्रिपल से ऐसा ट्रिपल रिजल्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इसे कमेंट कर देते हैं, लेट्स कमेंट दिस कोड, ठीक है, और इसकी सॉरी दिस में मल्टीलाइन कमेंट, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वेल ट्रिपल एग्जाम्पल इक्वल टू बेसिकली क्लास इज पेयर एग्जाम्पल ओनली and well result is equal to triple example dot get 3 results, right? And similarly I can print that println, right? What I can say, result dot. So now you see we got 3, first, second and third, right? So there are only these 2 classes where you can return 2 value or 3 values, right? So that is provided by default by Kotlin. So mostly we have covered about data classes, right? In case you have any query, you can send me your questions through comments. So you see we got 2, 4 triple result. I hope कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये सब सीखने में। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप और अच्छे से इसे सीखना चाहते हैं तो आप जो है जब भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस कीजिए कोड लिखने की, कोडिंग की, ताकि आपके स्किल्स डेली इम्प्रूव हो सकें। So thanks for watching. We'll see you in next video. हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।